on to Tamil Nadu viewers. DMK has hit back at TVK chief Vijay after his sharp remarks at the Kanchipuram rally. Party spokesperson TKS Elangovan called Vijay Tarkuri, which means a fool in Tamil. He has accused him of speaking without understanding the schemes already implemented in Tamil Nadu. Elangovan listed DMK's welfare record from slum clearance housing to freeing up several other cogged areas in his administration and also freeing up education up to degree level morning breakfast for school children, ration cards for every household, and also major industrial investments generating jobs. He also blamed Vijay for the Karur tragedy, saying that the actor and politician kept supporters waiting for hours together under the scorching sun, leading to multiple deaths. Elangovan questioned why Vijay arrived nearly 8 hours late that particular day and accused his cadres of neglecting all those supporters who were fainting, who were tired of waiting in that scorching heat. The DMK leader insisted that whatever Vijay promises today has already been delivered by the DMK. No, when he talks some nonsense, we call him Tarpuri. Not all the people. People are voting for us. People are with us. What he says, see, we have brought in slum clearance board long back, 50 years back. And every people who were living in small hutments were living in Pakka buildings, which means we have done a lot. There are lakhs of slum clearance board houses were opened, and even other way we are building other houses also. Now we have brought in another scheme in every district. The scheme called what casteless society houses for every caste. So we have brought in many schemes for housing, and education is made free until degree course. Earlier, Kamaraj was chief minister. He had brought in education as free until 11th standard. When Kalaignar came, he brought in education up to degree course, free education up to degree course. So we are giving education. We are giving noon meal scheme. What is he? God. Just he think that he is God. He is the reason for the 41 people who had died in Karur. He told the people that he will come and address at 12 o'clock. The people were made to wait from 8 o'clock in the morning until 7:30 in the evening, the scorching sun without water and food. They fainted. And his own cadres did not care to support the people who had fainted and fallen down. They kicked them. This is his own people. They have come to see Vijay only, all his party men. Nobody took care of the people who had fainted and fallen down. And he had not so far told the people why he had to come by 7:30 when he had earlier told the people that he will be there at 12 o'clock. My colleague Toya Jakshi is joining me live from Chennai. Toya, it was the first rally that Vijay addressed after the tragedy in Karur. And without wasting any time, he launched his attacks on the DMK, saying that the government is indulging in dynasty politics and also looting the people of Tamil Nadu, and which has now been responded to by the DMK, saying that Vijay has no idea of the scheme of things that the DMK has introduced. William Deepak, the TVK chief, Vijay, has become back active in politics again, with a small indoor public meeting in Kanchipuram, right, after 57 days of Karur stampede tragedy, which happened on September 27th. Vijay attended this public meeting, even, at a private college in Kanchipuram district, where only selected people with a minimal of 2,000 people, gathered in this meeting, where he also, has slammed and he's criticized the DMK in strong, language, I can tell you, because Vijay said that the DMK's policy is a scam. DMK, which is taking a stand against him, will have to regret it. This is what he's told. And he is also called, he's also stated Tarkuri, which means fool in Tamil, where he has said that, people, whoever has voted,
to the DMK government, the same people, you're calling as Tarkuri. He has slammed the DMK government by calling Tarkuri. But Vijay also announced the schemes that he will implement for the people. If he comes to power in 2026 assembly elections, where Vijay has also stated that he will provide houses to everyone and ensure that there is at least one person with a fixed income in every household. He's also clarified that his fight is for social justice and also raised issues, of farmers. On the other hand, the DMK government has also slammed, the TVK Vijay for whatever he spoke today, where the DMK is stating that whatever promises Vijay is making, whatever Vijay is speaking, all this has done very long back for the Tamil Nadu people. That is the reason where we call him Tarkuri the fool. And because DMK has slammed Vijay, stating that he doesn't even know what he's speaking. So this is why he's been called a fool, Deepak. Right, Toya, thank you for joining me with those insights. Well, the political face-off continues to intensify in the run-up to the assembly election slated next year. Now, moving on, amid the row over Centre's proposed bill to take control over Chandigarh, Punjab BJP chief Sunil Jakhar on Sunday said the Union Territory is an integral part of Punjab. He said that any confusion over it can be resolved only by discussing with the government. And the Ministry of Home Affairs has meanwhile clarified that the proposal to simplify the process of lawmaking exclusively by the central government for the Union Territory of Chandigarh is currently under consideration at the level of the central government. No final decision has been taken on this particular proposal, and this proposal does not in any way involve altering the governance and administrative arrangements of Chandigarh or the traditional relations of Chandigarh with Punjab or Haryana. This is what the Ministry of Home Affairs has said. ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 131ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ बयान उनको स्वयं नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित करके केंद्र सरकार के अधीन होने से चंडीगढ़ एक बड़े व्यापारिक और रिहायशी स्थल के रूप में उभरेगा। चंडीगढ़ की बहुत सारी जो योजनाएं अटकी हुई हैं वो योजनाएं केंद्र सरकार के अधीन आने के बाद पूरी होंगी और निश्चित रूप से भविष्य बताएगा कि चंडीगढ़ देश का एक बेहतर शहर बनेगा। और भगवंत मान जो बात कह रहे हैं वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कब्जा करने की राजनीति करते हैं, तो उनके कब्जे से कोई चीज यदि निकलती है तो उनको दुख होगा, मैं समझ सकता हूं। Viewers, earlier in a politically sensitive move that sparked protests in Punjab, Centre allegedly proposed to include Chandigarh under the ambit of Article 240 of the Constitution by tabling the 131st Amendment Bill in the winter session of the Parliament. And if the bill is passed, then it will allow the President to appoint a separate LG for the Union Territory. Chandigarh is currently administered by the Punjab Governor, and from the ruling Aam Aadmi Party to the Congress and Shiromani Akali Dal, all of them have raised concerns over the proposed bill, and the move is likely to weaken Punjab's claim over the capital city. Let's listen in. ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 131ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
Senior Congress leader and leader of opposition Pratap Singh Bajwa issued a call for unity across party lines. Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal also appealed to the union government not to introduce the bill, calling it a betrayal of goodwill placed in the centre by Punjabis. Now in Uttarakhand's Almora district, a major security alert has been sounded with the discovery of 161 gelignite sticks and more than 20 kgs of explosive material from a forested area near a government high school. The police bomb disposal squad and a dog squad was also deployed to the site, and a case has been registered against unknown individuals at the Salt police station. The SSP is now personally overseeing the investigation. An intensive search operation has also been launched across the surrounding areas. The police station teams and local intelligence units are working jointly to assess every possible angle about this weapon seizure, and the SSP has urged the public not to fall for any rumours, assuring that all the verified information will be shared transparently as the investigation progresses. थाना क्षेत्र का मामला जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस जो लोकल थाना पुलिस है वो मौके पे पहुंची, उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही हैं। Viewers, Delhi continues to gasp for breath because the air quality index in Delhi and the National Capital Region continue to worsen, with figures at an alarming rate across several parts of the region, and they are now being reported in the very poor and severe categories. Fresh AQI readings show a sharp spike in pollution levels. As you can see the figures on your screens, in Narela the AQI stood at 415, in Mundka it was 417, Rohini reported 438, Patparganj was at 400, and Anand Vihar was at 427, all of them in the severe category. Meanwhile, Chandni Chowk recorded AQI of 394, and ITO continues to remain at 384 in the very poor range, and in the NCR, Ghaziabad has plunged to 464, entering the severe category. And amid this alarming rise, the Commission for Air Quality Management has announced major changes, making the GRAB 3 rules more stringent and advancing several curbs to earlier stages. Under the revised framework, many Stage 2 measures such as uninterrupted power supply to prevent diesel generator use, additional traffic marshals, pollution alerts, and expanded CNG and EV public transport will now be implemented at Stage 1 itself. And some Stage 3 actions, including changes in government office timings, have now been moved to Stage 2. And a key Stage 4 provision, which allows 50% staff in government and private offices to work from home, has been shifted to Stage 3. The CAQM has clarified that Stage 1, 2 and 3 are already in force, and all departments must immediately implement the strengthened measures as Delhi NCR battles one of the worst pollution phases of the season. Moving on, a security scare unfolded at Delhi's National Zoological Park yesterday morning when a few jackals reportedly escaped from their enclosure. Authorities immediately launched a search operation in the forested area behind the animal exhibits, but the details on how many jackals escaped from the enclosure are still unclear. Officials are now working to ensure that the animals are safely returned to their enclosures, while also assessing how such a breach could occur despite existing security measures. Visitors and nearby residents have now been advised to remain cautious until the jackals are safely recaptured by the zoo department.
Meanwhile, the BJP strongly criticized Jamiat Ulema Hind President Maulana Arshad Madani for his remarks alleging discrimination against Muslims in India. BJP has hit back, accusing Madani of doing politics in the name of Muslims. BJP leader Yasir Jilani said that there can be no better place for Muslims than India, no better human being or elder brother than Hindus. He also added that Madani's comments ignored the inclusive efforts of the central government and instead sought to create unnecessary confusion and division in the society. Listen in to BJP. वोट बैंक के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर आतंकी बचाओ जमात एक बार फिर से काम पर। पहले ये बारूदी बुद्धिजीवी जो है, जो आतंक के डॉक्टर है, उनको कवर फायर देने का काम पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, इमरान मसूद, हुसैन दलवाई, अबू आजमी जैसे नेताओं ने किया। कहा ये निर्दोष है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, सरकमस्टेंसेस से आतंकी बन रहे हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इनकी जो प्रताड़ना की गई इसलिए आतंकी बने। अब वो स्पिन डॉक्टर ऑफ इकोसिस्टम जो है, वो इकोसिस्टम फैल चुका है और अब जमात के एक और व्यक्ति सामने आए हैं और वो कवर फायर दे रहे हैं और कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का देश में तो राष्ट्रपति भी मुसलमान बने हैं, परंतु आतंक की यूनिवर्सिटी का जस्टिफिकेशन और जायजीकरण नहीं किया जा सकता। अगर कोई आतंकवाद करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, परंतु जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो मजहब के नाम पर केवल आतंकी और आतंकियों के समर्थक को क्यों पैरवी करते हैं, क्यों वो हमेशा खड़े हो जाते हैं। अफजल को सजा होती है तो कहते हैं अफजल मासूम है, याकूब को सजा होती है बोलते याकूब मासूम है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं तो ये मोहन चंद शर्मा जी के साथ नहीं, एनकाउंटर किए गए टेररिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, सिमी के साथ खड़े हो जाते हैं, पीएफआई के साथ खड़े हो जाते हैं, हमास तक के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? Well, Madani earlier alleged that a Muslim like Mamdani can become the New York mayor and a Khan can become the mayor of London. But in India, Muslim cannot even become a university vice chancellor. Madani expressed deep concern over what he described as discrimination against Muslims in India, citing examples of Azam Khan and the government action against Al-Falah University over links to the Delhi terror attack. आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। मौलाना मदनी जैसे लोग उसको संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं और जिस मुद्दे को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग उच्च पदों पर सुशोभित है और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना मदनी का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मौलाना साहब को लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर तो नजर आ गए, लेकिन भारत के कई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और ऐसे अनेक भारत के टॉप मोस्ट संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुस्लिम नजर नहीं आए। उनको वो भी नजर नहीं आए जिन्होंने भारत के लिए मिसाइलें दी और जो भारत की मिसाल बने, जो पाकिस्तान के लिए आज परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन मौलाना को सिर्फ याद है तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसका जिहादी वाइस चांसलर जो जेल में है, या फिर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठा हुआ था वो आजम खान जिस पर कई सारे केसेस अभी चल रहे हैं, अनेक सारे हीनियस क्राइम में लिप्त वो मुस्लिम नेता याद हैं जिनके लिए वो आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जब लाल किले के सामने डॉक्टर उमर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है सिर्फ लोगों को मारने के लिए, इस्लाम के नाम पर,
तब इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन जब उनसे लिंक और जो तार खोले जाते हैं और अल्फला पर आरोप लगा करके बीसी को अंदर किया जाता है, तब ये बिलबिला जाते हैं। Viewers, moving on to the world of entertainment. At the Global Peace Honours 2025, Bollywood superstar Shah Rukh Khan paid a heartfelt tribute to the brave soldiers and innocent victims of terror attacks, including 26/11 Pahalgam and the recent Delhi blasts. Khan recited powerful lines honoring the courage of our security forces, saying those who protect the country earn the blessings of 1.4 billion people. 11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं, अपने आसपास जात पात भेदभाव तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए।